सर अभी ग्लोबल मार्केट सभी बढ़ रहे हैं, पर हमारा इंडियन मार्केट नहीं पड़ रहा। ऐसे नहीं है, ग्लोबल मार्केट कहाँ बढ़ रहा है? इफ यू मतलब आपको एग्जांपल है, ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन था, इंडियन मार्केट इसको सपोर्ट कर रहा था, क्या कहते हैं, अपना 16,750 को। यस सर, या 200 EM। हाँ, बट ड्यू टू दिस रशियन यूक्रेन दिस थिंग इट गॉट ब्रोक। नहीं ओके। तो आप, अगर आप यूएस का मार्केट देखोगे, अगर मैं यूएस का चार्ट दिखाता हूँ तो दैट चार्ट, कोई भी चार्ट मुझे मतलब उतना अच्छा नहीं लगा। ओके। जैसे मैं डाउ का चार्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। डाउ को अगर नॉर्मल रहना था तो यू शुड नॉट ब्रेक दिस लेवल यस सर। 34,400। तो ये देखो, अब उसके बाद ये कभी इस लेवल के ऊपर अभी नहीं गया। अब लास्ट टाइम भी कोशिश किया, अभी भी जब इसके नीचे, तो अब ये चार्ट थोड़ा सा डिसऑर्टेड हो गया, कंसोलिडेट ही करेगा अभी अभी ये। यस सर। ठीक है, तो ये बहुत पहले हो गया था। कब हुआ था, क्या कहते हैं, हम लोग के चार्ट खराब होने से पहले ही एक चार्ट खराब हो गया था। नेस्डैक का अगर आप चार्ट देखोगे तो नेस्डैक का चार्ट ऑलरेडी बहुत पहले खराब हो चुका था। लेकिन हाँ, नेस्डैक में जो भी होना था ऑलमोस्ट इट्स डन। नाउ इट्स गोइंग, कंसोलिडेशन हो गया, नाउ इट्स गोइंग फॉर ब्रेकआउट। ये इस लेवल के ऊपर अगर जब भी निकलेगा तो वी शुड गेट अ वेरी गुड मूव इन टू आवर टेक्नोलॉजी शेयर्स ऑल्सो। कौन यस सा सर। लेवल, 14,700, तो अभी 14,297 है। व्हेनेवर इट क्रॉसेस दिस लेवल we'll get a very good move in our technology shares. ओके सर। सर नमस्ते। Yeah, जैसा नमस्ते। कि आपने कहा कि ये साल साइडवेज ही रहेगा करके, हाँ, तो ये साल इन द सेंस फाइनेंशियल ईयर बोल रहे हैं कि आप ये पूरा 2022 बोल रहे हैं? it's, I think this whole year 2022 will be like this because टेक्निकल, मतलब मैं मोस्टली टेक्निकली देखता हूँ, फंडामेंटल देखता हूँ, लेकिन मोस्टली टेक्निकल में जब तक कुछ चीज है जो कूल ऑफ नहीं होगा ना, तब तक मार्केट कंसोलिडेट ही करेगा। और ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, डाउन साइड नहीं आ सकता, बियर मार्केट नहीं आ सकता, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। पॉसिबिलिटी है, अगर भी अगर 15,100 के नीचे हम चले गए तो मे बी चांसेस आर विल गो इनटू अ बियर मार्केट, बट chances is 1% or 2%, but we have 90% chances that we'll take a support from there and we'll go up, and next 2 to 3 years we'll have a very good bull market. ओके सर। Yeah, definitely. हाँ, still till now means अगर आप देखोगे last 2 to 3 weeks market ठंडा हुआ, लेकिन few stocks are doing a very, giving a very good returns, like if you see company like Fine Organics. तो ये if you see last, ये वीकली है, लास्ट 2 3 weeks, और इफ यू सी अ डेली चार्ट ऑल्सो, market is going down but this shares is going up. If you see in weekly also, last few days market is going up, down, but this stock is going up. So there are stocks which are going up. If you see this stock also, if you see this stock, market is going down but this stock is giving almost, kitna, last 3 weeks it went from 2,800 to 3,800, almost it has given 30 to 40% return in a week or two. यस सर। So there will be a stock you need to find market, whether it will be in bear market also. If we will go in bear market also, there will be some stock will be which will give you good returns. So we need to find those stocks. There is some company called Jyoti Resins. Vinit is asking. Yes, see this last 2 week from 1,200 went to almost 2,000, almost 50% return in
in a two weeks. Yes, sir. So you'll get a stock market uh, is not like कि आप एक ही कंपनी में बैठे रहेंगे तो you'll get a return. You have to switch the things. Currently, now what we are holding like company like GNFC. If you see, market went down. It didn't went down. It didn't close is below our stop loss. It went up and it's going making a new high. Company like Deepak Fertilizer, we are holding. It came down here, took a support, again going up. Whenever this 650 whenever it crossed 650, our target is almost in 4 digit. So that will happen. We're holding these companies. Fertilizers. So always try, whenever market go down, try to see which stock is giving a relative strength better than our Nifty or our index, which are going So up how to and find out that, sir? uh, How to find out that? uh, for that I have to take a 1 hour class for that. That is a relative strength. You need to there is one indicator here. Yeah, yeah.